हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कैट 2025 का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्वेश्चन नंबर। सो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है और वर्टिसेस पी क्यू एंड आर ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, तीन वर्टिसेस दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। इफ द डायगोनल एस क्यू इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट ए जीरो देन द वैल्यू ऑफ ए इज। ठीक है, तो एस क्यू डायगोनल बोला, डायगोनल एस क्यू। सो पी क्यू आर एंड एस, पी क्यू आर एस। तो एस क्यू डायगोनल होगा तो पी आर भी डायगोनल होगा। सो मिड पॉइंट ऑफ बोथ आर सेम, मिड पॉइंट of SQ is equal to midpoint of PR. So P coordinates -3, -2 and R, PQR 9, 1. So midpoint equal to -3 plus 9 by 2 -2 plus 1 by 2. So this is 3 and -1 by 2. So this is midpoint of SQ and Q is given 1 -5. तो इधर से S निकल जाएगा, so we can write x plus 1 by 2 is equal to 3, y -5 by 2 is equal to -half. So x is equal to 3 is 6, so ये 5 and this is -1 plus 5, this is 4. So S coordinate 5, 4. So we have S, Q and S. So now slope is equal to -5 -4 by 1 -5. So this becomes 9 by 4. So our equation becomes y -4 equal to 9 by 4, x -5, 4y 16, 9x, 9 5 ja 45. So we have intersect the x-axis at a0, then the value of a is. तो हम लोग लिख सकते हैं y, this is 0. So 9a plus 16 minus 45 is equal to 0. So यहाँ से a becomes 29 by 9.